बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थाई एम्बेसडर जो हैं वो हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम मक्खन निकालेंगे जिस तरह रिवायती तरीके से हमारे यहाँ निकाला जाता है। अभी जी मधानी जो है वो डाल लेंगे चाटी में। This is like a lid. Yeah, lid. This one Okay. for control. Okay. When we do this. So this is traditional technique. Yeah, traditional treat. This is a good exercise. No need to go to the gym. Just do this every morning. You get strong. In village, 30 years before, every house has the same. And early morning they do the same. Oh, okay. So you get a fresh butter. Yeah. Every morning. Always come out good. Yeah. Hopefully. Let me check. Oh, okay. No, we have electric. Yeah. But this is more fun. I like the decoration of the this thing. So this is from the old days as well. Yeah. The decoration. Yeah. You can see yourself in the mirror. Yeah, that's why. That's why we have the mirror here. Look. Okay, now I do. Okay. Thank you. It's okay because in Thai ways we do like this as well. Okay, Sit okay. on the floor. रस्सी जो है ना वो थोड़ी टाइट हो रही है, तो इसको थोड़ी मलाई लगा लेंगे। That's why people in countryside are strong. Exercise every morning. No need to go to the gym. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा पानी जो है वो डाल लेंगे। Okay. The buffalo milk get white and the cow milk is yellowish. Yellow. Yeah. I see. तो अब जी गन्ने के रस वाली खीर जो है वो बना लेंगे। गन्ने का रस जो है वो डालेंगे बर्तन में। So this is sugar cane. Yeah, sugar cane. Yes. We need to mash them like this. So how long did you keep it in water? Oh, 1 hour. 1 1 hour. hour. So you do like this? Yeah. तो अब चावल जो है वो डाल देंगे। When we cook like this at home, Yeah. my mom said that you have to put everything. Yeah. Otherwise, Yeah, sure. you waste the ingredient. तो अब जी खीर को जो है वो पकने देंगे। इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो लगेगा। Okay. Good. Master Chef. Right down here. काम थोड़ा गर्म हो गया, मक्खन जो है वो आ चुका है, देखें। तो थोड़ी बर्फ डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। You can check. Eat. Very good. Oh. Alhamdulillah. 100% pure butter. Yeah, and fresh. Yes. Just now. Alright. Right. Delicious. So here's our chef, so I have to Yeah. do something. Chef is checking. Master Chef. Yesterday we eat his recipe. Awesome. Like this one. Sugar Very cane. यहाँ पे एक बर्तन में थोड़ा ठंडा पानी ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें से लस्सी जो है अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। बटर बॉल। Oh.
You make it look so easy. Yeah. But I don't think it's easy. Oh, wow, very professional. These activities very rare to find in these days. Yeah. Hope you guys enjoy it. Yeah, enjoy it very much, very much. Fresh butter. Chef from Pakistan, chef from Thailand. Roy. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बटर जो है वो निकल आया बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह. खपखुन खप. ये थाई में बोलते हैं खपखुन खप. शुक्रिया, थैंक यू. I like curry. They said it's more fragrant than the one in the back that they sell. in the Yeah, this market. one is out from our field. जी दोस्त भाई मजा So what next for the crop after this? after this rice. अल्हम्दुलिल्लाह जी खीर जो है वो तैयार हो चुकी है और खीर में थोड़ा दही डाल के खाएं ना सादे वाला तो मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है. This is very good. अब सरदाई बनाएंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खशखास जो है ये डालेंगे और खशखास को धो लेना है. When I do first time, I'm not good like you do. Thank you, Yeah. shukriya. 3 days I try to do, then I become good enough I'm to not- like you doing first day. Thank you. ซอสอ๋อซอสดอกเหลืองไหมครับท่าน Oh, yeah. ใช่ครับ So this Yeah, one, Yeah. like cookie. Yeah. तो यहाँ पे जी साग आ चुका है. बिस्मिल्लाह. और मकई की रोटी. Oh, I sorry. have to put butter on it. Okay. Yeah. The one we just made. Yeah, fresh one. Okay. We did with this. We construct. เป็น Thai spinach. ใช่ครับนี่เป็นสปินัช Yeah, spinach. We put more butter. Yeah. Okay. Very good. Go. I love this one. ซิมิลาปลัก Palak, yeah. 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 Amazing. Amazing. अल्हम्दुलिल्लाह जी खशखास जो है वो रगड़ ली है. अब गुलाब की पत्तियां डालेंगे. सूखी हुई पत्तियां डाली जाती हैं पर सूखी हुई नहीं है तो फ्रेश डाल लेंगे. So in Thailand we also call gulab. Same. जी. और थाईलैंड में भी थाई लैंग्वेज में गुलाब ही कहते हैं इसे. थोड़ी काली मिर्च. बिस्मिल्लाह. सौंफ. मेलन सीड्स. मेलन सीड्स. 4 मगज. बादाम. Yeah. Sardai. स्पेशल मिल्क Yeah, special milk. अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छी तरह रगड़ ली हैं. थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे. दूध सारा एक साथ नहीं डालना है नहीं तो गुठलियाँ जो है वो बन जाएंगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हस्बे जायका चीनी डालेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. छान लेंगे कपड़े से.
अल्हम्दुलिल्लाह जी, सरदाई जो है बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाह। Very refreshing, delicious, and you have smell of the roses as Yeah. well. Oh, yeah, कपड़ा भी तैयार है। very delicious. सुजाक Yummy and good taste. It smell from I think Ajam. या Yeah. सौंफ Special milk. Very special. या Never tried it before. To some souvenir from Thailand. Oh, thank you so much. Similar to Pakistani, but this is like we use it a lot in countryside. शॉल है ना? Oh, Thank you so much. thank you, thank you very much. So this is my dream come true, because sitting in the office cannot fulfill my dream. Yeah. It is part of the job. Yeah. But I like to learn more of the culture and food and people of Pakistan. So I have a really, I think I and my team has the best experience, one of the best experience in my life, tasting amazing food. Many of them I have tasted for the first time. And it tastes good. And thank you very much for teaching me. I hope I'm not ruining your butter and everything. But come out to the countryside and we can see like people and experience by myself the generosity of people of Pakistan. So I'd like to thank you, Mr. Mubashir. It's honor for me. And your family and also people of Selcon and people of Pakistan. Thank you. Thank you so much. It's honor for me hosting you. I already told you, you guys are like our family. Thank you. So this is your house, your Thank you. village. Anytime you can come. Thank you. Yeah. Thank you. With family. I hope you guys Yes, come with they your will family. enjoy, they will enjoy. So they also enjoy the, you can say our Yeah, culture yeah. and the greenery here. Yeah. Yeah. Everything. And the fresh air also. Yeah, that's true. That's true. It's hard to find in the Yeah, city. yeah. And yeah, Pakistan become our second home already. So we are happy to be here always. Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। Allah Hafiz. Bye bye. Bye bye. तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है, हमने भी जितनी हो सकती थी कोशिश की है। अच्छा वक्त गुजरा, अच्छे 2 दिन गुजरे हैं, खाना उन्हें बहुत पसंद आया और अल्हम्दुलिल्लाह गाँव जितना प्यारा है वो तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।